Hey guys, I'm Sumita Karir and ransomware attacks have become the new normal along with COVID-19. In fact, the past 1 year has seen 150% rise in ransomware attacks. So many users have lost their data, companies ने billions of dollars खो दिए हैं, but हमें ये समझना है कि ransomware attacks हैं क्या, वो कैसे carry out हो जाते हैं और आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। So what are ransomware attacks and how do they happen? Well, simply stating, when hackers use extortion tactics to lock your systems और उसके बाद जब वो आपसे ransom demand करते हैं, वो कहलाया जाता है एक ransomware attack और उसी से क्योंकि वो ransom मांगते हैं इसलिए these attacks are called ransomware attacks. Hackers restrict your access to systems unless the payment is made और payment usually की जाती है, मांगी जाती है cryptocurrency में because कोई governments उनको track नहीं कर सकते. And that is of a serious concern, guys, to not just users like you and me, but to moving providers of services जैसे hospitals, transportation, shipping organizations और in some cases ये attacks हो सकते हैं fatal. Now, ransomware attacks are also some of the most popular ones too because there's lots of money involved. In fact, अगर मैं आपको figures बताऊं, 2017 में ransomware attacks resulted in $5 billion in losses. And ransomware attacks mostly took off in 2020. They rose to an all-time high in 2020 when work from home actually meant security lapses, access to more and more employee systems. In fact, अगर मैं आपको figures बताऊं, victims till now have paid more than $406 million in cryptocurrency to attackers. And guys, these are just numbers that are reported. बाकी सारे attacks तो report ही नहीं किए जाते. अब जानते हैं how does a typical ransomware attack happen? सबसे पहले जब एम्प्लॉइज को रियलाइज होता है कि उनकी बिजनेस वेबसाइट इज डाउन या सिस्टम्स इनएक्सेसिबल हैं, कोई शेयर्ड ड्राइव्स इनएक्सेसिबल हैं. नंबर 2, एक रैंसम डिमांड आती है प्रोवाइडिंग अ बिटकॉइन एड्रेस वेयर द पेमेंट मस्ट गो. नंबर 3, अ डेडलाइन इज गिवन इफ द कंपनी इज टू बी ऑपरेशनल अगेन. नाउ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि रैंसमवेयर अटैक्स कैसे सर्विसेज को पैरालाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट, ऑल्सो वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट्स ऑफ मुंबई, केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट बिकॉज ऑफ ransomware Petya. Worldwide, that Petya attack infected Ukraine, US, Russia, Europe and many other regions. और अगर आपको याद होगा, एक WannaCry ransomware नाम का भी अटैक हुआ था that affected older versions of Microsoft systems because the systems अपडेट नहीं किए गए थे. Around 230,000 units in over 150 countries were impacted. In fact, India में भी उसने banks को hit किया और तो और Indian government portals को भी hit किया. So how are they carried out? अब ये समझते हैं. Now there are a couple of ways in which these attacks are carried out और आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है. First of all, they will be spam led. आपको कोई spam emails आएंगे. Phishing led. Now this is one of the most common ways of carrying ransomware attacks. Now attachments come to victims in an email appearing as a file that they should be trusting. So once those files are downloaded, they can completely take over your computer. उसके बाद कुछ अलग तरीके के भी ransomware attacks होते हैं जो vulnerabilities, computer system की vulnerabilities को exploit करते हैं without actually needing a fake link. उसके बाद होते हैं scareware tactics, basically creating fake softwares or messages purporting to be from a legitimate source. So आप अगर इनमें से किसी भी एक तरीके के ransomware attack में अगर फंस गए तो समझिए कि आपका पूरा डेटा उनके पास होगा और आपके पास आएगी डिमांड एक ransom देने के लिए. So who are the most common targets? Basically ransomware attacks के most common targets हैं organizations. Attackers may attack universities because they tend to have smaller security systems. Now sometimes financial organizations, government institutions are tempting targets also because they seem more likely to pay a ransom quickly because उनके systems dysfunctional हो जाएंगे और बहुत सारे लोग उसके ऊपर dependent हैं. Now government or law firms also because they have sensitive information and they would be willing to pay money to keep news of a compromise quiet. अब आपको पता लग गया है कि ransomware attacks कैसे कैरी किए जाते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या मोटिव होता है, किस तरह से क्रिप्टो करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है. अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे. हाउ कैन यूजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कीप देमसेल्व्स सेफ? वेल, एज डेंजरस एज ransomware is, you're not completely helpless against it. So there are a couple of ways that I'm going to tell you that you can use to keep yourself safe. Number 1, have endpoint protection and monitoring and scanning of remote infrastructure like our computer systems, our laptops, जब हम घर से काम कर रहे हो. Number 2, in case of an attack, act fast. Because ransomware, guys, moves laterally further into your systems. एक बार आपका एक सिस्टम में कोई चीज़ vulnerability exploit करेगा, उसके बाद वो आपके पूरे सिस्टम में घूम जाएगा. So you have to attack fast. Inform your IT team ASAP. And do not open suspicious emails or links. Do not even visit the websites that may contain ransomware links.
नंबर 3, रन अपडेटेड सॉफ्टवेयर। ये हम लोग नहीं करते हैं, कभी कभी आलस में आके कि ठीक है बाद में कर लेंगे, बट whenever you get security patches, whenever you get updated softwares either on Microsoft or on Apple or even on Android, make sure that you update those softwares. Number 4, use strong passwords that are unique to each site that you visit and never have the same password for every site. And always use two-factor authentication wherever that applies. WhatsApp में apply होता है और काफ़ी other social media platforms में apply होता है, तो definitely use two-factor authentication. Number 5, install a good antivirus software that detects malicious programs like ransomware as they arrive. Number 6, keep good backups and consider having more than one device for backups, because अगर एक केस में आपका कंप्यूटर हैक हो रहा है, अगर आपके कंप्यूटर को ransomware ने टारगेट किया है, आपके पास बाकी बैकअप्स होंगे। तो इस केस में you don't have to be under pressure by ransomware attackers to pay them money. And number 7, do not click on random links. ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो आपको लिंक्स ऑड लगते हैं उन पे कभी मत क्लिक करो, और इमीडिएटली जो भी ऑड लगता है थोड़ा सा भी, alert your security team at work. So guys, do your part by staying vigilant, because कुछ भी unhackable नहीं है इस दुनिया में, चाहे कोई भी ब्रांड कितना भी बोले कि हमारे पास end-to-end protection है, we are encrypted and everything. Do not fall for those things. So how you can stay safe is by acting proactively and following some of the above steps that I just mentioned. Well, that's it from me. This is Sumita Curry signing off, and of course, stay tuned to Gadget Times for everything on tech.